नहीं यस मैंने आपसे ज़्यादा क्लासेस मिस की हुई आपने ज़्यादा तो मिस नहीं की एक किया रहना चाहिए था एक क्यों की नहीं थी हाँ उससे पहले तो ये और एक मिस किया था मैंने नहीं मेरा तो हो गया मैंने एक से ज़्यादा मिस नहीं किया था क्या बचा है मेरा Alright, you share your place? Thank you. So on that day, how was your program? Not good. क्यों? अच्छा नहीं था वो बच्चों के साथ बिठा दिया लगाने उन्होंने सब गड़बड़ कर दी उसमें से मेरा भी था तो आपको गाने दिए नहीं थे क्या इसलिए दिया I need one more ना because मेरे पास मेरा शायद से ये लोग आ जाएंगे ना ये आ जाएंगे नहीं लेट आज today I am not going to wait मुझे जाना है we can say we have to get off only 45 minutes और उसमें वो 15 मिनट लेट होंगे 30 मिनट्स में क्या ही सिलेबस पूरा करते हैं अच्छा मुझे बता दो तुम जिस पर we have completed molecules of elements हो गया why do atoms exist atomicity भी हो गया था I think atomicity also we have completed what about ions let us start with that ions वाले पार्ट से हमको स्टार्ट करना है बराबर है ना अब लास्ट टाइम आप थे आपको पास ये आंसर नहीं है क्योंकि मैं नहीं था वेकेशन में गया था ओके सो व्हाट आर मॉलिक्यूल्स आपके लिए क्वेश्चन है क्योंकि मैं तो भूल गई मॉलिक्यूल्स एक साथ बैठ के हाँ क्लास मॉलिक्यूल्स नहीं कुछ भी बोलो मत आपने लिखा भी था I have asked everyone to write in notebook few points at least write down ये सब हो गया था हाँ I need answer group of two or more atoms these atoms are of same type or different type same or different always different no हाँ तो फिर ऐसे कुछ जस्टिस करो ना उसके साथ में they may be same or different right ना they may be same or different तुझे कवर कर दिया तीनों लड़कियों ने हाँ बच गया अच्छा है नहीं अच्छा नहीं मेरे लिए अच्छा नहीं है ना फिर आप बात नहीं करोगे कुछ बोलने वाले नहीं so it is a group of two or more atoms this atom may be same or different if you are having same type of atom then you will get molecule right the same type of atom if you have for example if you are bonding hydrogen and hydrogen it is hydrogen molecule but if you bond hydrogen with other atom it will be different compound right now the next part which we have to do it is what is an ion इसके लिए हम ज्यादा उल्टा सुल्टा नहीं जाते हम डायरेक्ट अपने मुद्दे पे आते हैं what is an ion तो what is an ion मैं ions करके मैंने डाल दिया because I want to explain one compound what is an ion एक सिंगल ion से मतलब it is more than one okay so what is an ion composed of metals and composed of metals and non-metals any other thing if you are saying चलो अभी आपका एग्जांपल लेते हैं it is composed of metals and non-metals so give me example of iron बोल रही हूँ हाँ मैं compound नहीं बोल रही you said iron it is composed of metal and non-metal बराबर है ना according to you as it is rough I am writing here नहीं तो कोई अगर गलती से कहीं पर recorded देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना iron according to you हाँ it is it is composed of metal and non-metal okay तो इसमें क्या है iron वो उससे कंप्लीट दोनों का अगर मिक्सचर होगा तो फिर वो आयरन होगा लाइक दोनों जिससे दोनों से बना हुआ है दोनों से बना हुआ है ओके दोनों से बना हुआ है तो मैं एक मेटालिक कंपाउंड मैंने कोई भी ले लिया एंड इफ आई टेक नॉन मेटालिक कंपाउंड ओके तो उसमें आयन कहां से आ रहा है वो बताओ मुझे नहीं पता है कि आपको कि आयन का एक मैंने बोला आयन किसको बोलते हैं जब मैंने ये भी बोला मैंने आयंस लिखा है मींस इट इज मोर देन वन हां मोर देन वन तो फिर ये मेटल और उसका मिक्सचर वाला और कुछ इसमें
पहले ये हटाते हैं। मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर हो गया, योर दिस आंसर इज करेक्ट। सो आयन are positively or negatively charged species. Okay, positively or negatively charged species. Now, if you are saying it is a combination of metal and non-metal, the simple example which every time we have to consider is NaCl, and same example I think is explaining you. It is formed by the combination of Na as well as Cl. Now, in this Na and Cl, which is metallic part, and periodic table is there in your syllabus, na? I think you have done The it. periodic table no, this time I don't have it. So last time I studied it. Like this time as This this year you have periodic table. It is done. बोल रही वो हाँ बोल रही है हमारा जो स्कूल हाँ periodic CBSE है ना सबका, तो CBSE के 9th standard में periodic table है या नहीं है ना? मुझे नहीं पता, मुझे ICS में है वो मुझे पता। Which is metallic and non-metallic part? Na metal. Na it is metallic part, whereas Cl it is non-metallic part. Okay. Periodic table. If you move from left to right side, left hand side metals are there, right hand side non-metals are there. So in third period बता देती हूँ, periodic table check करना. In third period at extreme left you will find this one sodium, and as Cl it is a halogen, it is 17 group, you will find at the end. इसके बाद में आपका दूसरा यहाँ पे halogen ये वाला family कौन सा था लास्ट में का 18 वाला पढ़ाया है मैंने, noble gases understood ना? So what we are doing, arithmetically we are increasing one electron from 1 to 8. Here it is 7 electron and last year contain 80 electron. ये periodic table का है. Okay, but थोड़ा पता रहेगा तो it will be useful for you when you study periodic table. So it is a combination. You are saying combination, okay? But metal, non-metal, they are not directly combining. Remember this, huh? This metal it will be get converted into its metal ion. Similarly, non-metal it will be get converted into non-metallic ion. ये conversion पहले हो, समझ में आया? Even though we are writing NaCl, right? बराबर है. It is ionic compound NaCl, but this combination it is directly from atomic state का ionic में convert होगा. Gaseous atom it will be converted into ionic form and then your NaCl compound will be formed. ये कैसे form होता है मैं आपको जल्दी अपने बता देती हूँ. देखो टाइम देखो अभी तक नहीं आएगा, you know? हाँ 36 हो गया. Every time this is happening. तो यार ठीक है आ गई 6 मिनट. हाँ मैं इससे बंद कर तो बहुत ठंडी है. नहीं हाँ yes come now. Today you are fine ना? मेरे जैसा बैग उठा के लेके जाते हैं. एक लेक्चर है आज. Yes. वो हाँ yes हाँ. ओके चलो फिर फटाफट करते हैं. मैं भी तुरंत भाग जाऊंगी. लेकिन फिर मेरे को क्या पड़ेगा सब पास कर. ओके चलो. We are doing ions. क्वेश्चन पहले मैंने पूछा था व्हाट आर आयंस. सो आयंस आर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस. ओके एग्जांपल इज NaCl compound which is an ionic compound. क्या चाहिए आपको? आपके पास है एक्स्ट्रा? थैंक यू सो मच. क्यों बेटा इतना बड़ा बैग लेकर आई, एक पेन अंदर नहीं रह गया? वो स्कूल के बाद से वापस में तो मिलना ही पड़ेगा मम्मा से. आपने मेरे को केमिस्ट्री के बारे में नहीं बोला, आपने मेरे को इसके मैथ्स के बारे में बोला था कि मैथ्स सुधारो. अच्छा मैथ्स सुधारो, केमिस्ट्री में मैथ्स नहीं आपने केमिस्ट्री में मैथ्स जो केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आए थे आपने बोला कि मेरा क्वेश्चन क्या है? मैथ्स नहीं है केमिस्ट्री में? है थोड़ा सा है ना? तो मैथ्स सुधरेगा वहां पे तो यहाँ पे केमिस्ट्री में और इंप्रूवमेंट होगा ना. बस हो गया विजिट करते. बस हो गया बेटा. कम बैक. चलो बात आ गया. मुझे भी ना इधर मुझे भी घर जल्दी जाना है फर्स्ट थिंग. और सेकंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई हैव टू कंप्लीट विद दिस.
अभी हमारा इतना बड़ा बड़ा गैप हो जाता है, 15 मिनट्स का लेक्चर होता है, उसमें आप लेट आते हो, आपको शांत कराने के लिए और 15 मिनट्स लेट जाते हैं, 15 मिनट में क्या ही होगा। और एक आने की बाकी है, वहां से और एक आने वाला बाकी है, नहीं दो ना, बहुत अच्छा चलो यहाँ। So example, ions are positively, अभी now stop, हाँ, positively and negatively charged spaces. Compound of ionic compound is NaCl. Okay, now we will start with atomic number. How the charged ions are formed. It may be metallic charge ion or non-metallic charge ion. So what is atomic number of sodium? मैंने आपको लर्न करने बोला था, किसने? 11. हाँ 11, good. And A11 electronic configuration. Electron, हाँ. मैम 2 8 2 1 2 8 1. ज्यादा दिक्कत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सोचना नहीं है और कुछ यहाँ से वहाँ उल्टा सुल्टा कैलकुलेशन नहीं करना है. You are dividing only this 11 electrons. Remember this, huh? You are dividing only 11 electrons, and this electrons are divided by this particular formula. I think in previous topic we have done K, L, M, N. याद आया आपको? K, L, M, N with N is equal to 1, 2, 3, 4. ये ऐसे है 6, 7. So और चलो जल्दी फटाफट आ जाओ. So 11 sodium 281. Okay, यहाँ पे हमने क्या किया है? We have just written atomic state. Ionic में नहीं गए. Then next one for chlorine. Cl number, atomic number. मैंने लर्न करने बोला था, हाँ 17. atomic number, symbol, mass number, electronic distribution. Let's divide this 17 electron. अभी just now I have shown you कि element with formula 287. क्या लर्न किया था कि वो formula से मिला? ऐसे आ गया, very good. ऐसे आ गया तो अच्छा. लेकिन ऐसे में गलती मत करना. 287. See here. Now this sodium requires 7 electron. जो लेना, it is not at all easy. Okay, because big amount of energy is required. So instead of taking 7 electron, sodium will give 1 electron. On giving that electron, your new electronic configuration becomes 2 and 8. चला गया एक electron, and this sodium it is converted into Na positive. So this is positively charged ion. Okay, positively charged ion को क्या बोलते हैं? cation. Anion. हाँ, अभी इसको याद कैसे रखना है आपको बाद में बताती हूँ, पहले ये देख के देखो. This is anion. On the other hand, Cl it is having 7 electron. It is in need of only 1 electron. क्यों ये बेचारा अपने साथ इलेक्ट्रॉन देके बैठेगा जब सोडियम सामने है तो. So Cl it will be 2 8 8 and Cl it is converted into Cl negative. This is known as cation. Okay, cation. अभी ये याद करने मतलब थोड़ा तुमको डिफिकल्टी हो गया because normally we are saying cathode and anode. What is charge on cathode? Negative. Anode is positive. देखो ये बराबर लिखा है, गड़बड़ किया है. हाँ, पॉजिटिव कैटायन. आ जाओ. पॉजिटिव कैटायन ये इसमें से समझ में आ जाता है ना. पॉजिटिव कैटायन एंड नेगेटिव एनायन. यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोड्स. नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज cathode, positively charged electrode is anode, and when it comes to ion, cations are positively charged whereas anions are negatively charged. तो हमारा जो वहाँ पे था, what are ions? So what are ions? They are the charge spaces. They carry either positive charge or negative charge. Ions with positive charge they are known as cations. आपको देखो ये ना पता नहीं ऐसे अलग अलग सेंटर में पढ़ा के अलग अलग बोर्ड को पढ़ा के ना
अब मैंने वो वर्ड बोलना ही सारे बंद करके डाले, मेरे को बेटर ऑप्शन लगता है भाई लिख दो। आप लोग कुछ और बोलोगे उसको, वो आईसीएसई वाले कुछ और बोलते हैं उसको, तो भाई ये है, आपको जैसे इसको प्रोनाउंस करना है वैसे कर लो। पॉजिटिवली चार्ज कैटायन, ओके, एंड रिमेंबर इलेक्ट्रोड व्हिच कैरी पॉजिटिव चार्ज इट इज एनोड। यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना, समझ में अगर आपको याद नहीं आ रहा है, जस्ट राइट डाउन दिस, फ्रॉम दिस यू विल गेट टू नो एनोड इट इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, whereas ion cation it is known as it is positively charged. Similarly negatively charged it is anion. Okay, now till this part we have 2 8 and 2 8 electron. Now the next thing, ये तो सब हो गया। After this what happened, we have positively charged ion, we have negatively charged ion, okay. As usual between positive and negative there is a process of attraction, so this will form a bond which is known as ionic bond or ion, this complete compound it is known as ionic compound, याद रखना है। और आपको चार्ज आयंस, where you will get charge ion in covalently bonded compound or ionically bonded compound, ionically bonded compound, okay. Many times you will find that it is polar, this particular, for example benzene it is polar or non polar, benzene पता है ना, नहीं पता एलिमेंट है, हाँ एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट नहीं, it is a compound, it is a compound, it is organic compound, okay। 10th standard में आपको organic chemistry कार्बन compound है। चलो come back on this one, what is an ion, देखो आपके बुक में क्या क्या लिखे है, ion a compound composed of, इसे भी टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन करते हैं ना, metals and non metals, okay। लिख रहे हो या अंडरलाइन कर रहे हो, what you underline, easy work, पेपर में याद नहीं आता, लिखो फटाफट, शॉर्टकट में लिखो, ज्यादा मत लिखो, राइट डाउन दिस वन, कंपाउंड फूड डैश मेटल्स एंड, कौन से पेज से पढ़ रहे हो? 43 इसके बुक में, इसमें जो बुक दिया है ना उसके पेज नंबर 43 से मत पढ़िए, मेरा भी वही था, मेरा बुक घर पे आराम कर रहे हैं। देखो फटाफट, sentence, full sentence you are writing, compounds composed of metals and non-metals, composed of metals and non-metal, contain charge, क्या ये, contain charge, okay, then this charge species are known as ions। आगे का पूरा कर लोगे ना, without looking in book you can write ना, species which carries positive charge it is known as positive charge, यहाँ पे compounds composed of metals and non-metals contain charge species, put full stop, these charge species are known as ions। After that just write down description for the positive and negative, ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए इसलिए रखा है because you are completely aware of this electrode which charges they have, right now cathode it is positively, sorry cathode it is negatively charged but cations are positively charged, anode it is positively charged electrode but anions are negatively charged, because these words they are little bit similar और कुछ नहीं है, okay, these words are little bit similar। देखो cation cathode, right, anion anode, anion कौन सा चार्ज कैरी करेगा, नेगेटिव, हाँ बोलो, एक डाउट है, हाँ जल्दी हाँ फास्ट, तो फिर इसमें पॉजिटिव प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और इन दोनों में क्या डिफरेंस है?
प्रोटॉन, प्रोटॉन और हाँ। क्या? हाँ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है? प्रोटॉन किससे मिलता है? प्रोटॉन इट इज ऑब्टेन फ्रॉम विच एटम? एटम्स, न्यूक्लियस से। अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट एटम वाला प्रोटॉन और हाइड्रोजन वाला प्रोटॉन? एटम, एटम वाला प्रोटॉन, ये वाला जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, हाँ। राइट ना? यहाँ पे न्यूक्लियस P and N। अभी ना बेटा यू ओनली सी वेयर इज दैट प्रोटॉन। अरे बाप, जो वाला नहीं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और कैटायन और आनायन में प्रोटॉन कैसे करूं? बहुत कुछ डिफरेंस है उसके अंदर। ये मेटल से मिल रहे हैं आपको, ये सारी चीजें है ना मेटल एटम से मिल रहे हैं आपको। मेटल एटम के जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ना तब आपको मिल रहे हैं, ओके। और ये उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन दे आर ऑलवेज एसोसिएटेड। अभी यहाँ पे इसको तो सेपरेट कर सकती है। कैन यू सेपरेट दिस? कैन यू सेपरेट दिस वन? इट इज ऑलवेज इन कॉम्बिनेशन, इट इज ऑलवेज इन कॉम्बिनेशन, बराबर है। बट if you remove the electron, if electron is lost, if electron is gained, there will be charge। oxidation state में फर्क पड़ रहा है। यहाँ से अगर तुमने इलेक्ट्रॉन निकाल भी दिया तो क्या ज्यादा से ज्यादा तुम क्या करोगे? you will just make difference in the oxidation state, जो मैंने यहाँ पे किया। इससे प्रोटॉन के नंबर में मैं डिफरेंस कर रही हूँ। तो फिर विदाउट आयोनिक बॉन्ड अगर वो सिंगल Na ही है तो फिर वो कुछ भी नहीं होगा, कैटन भी नहीं होगा और एनायन। वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल, वो न्यूट्रल एटम है, ये न्यूट्रल एटम है, ये कुछ नहीं है, ओनली इट इज अ न्यूट्रल एटम। On losing or gaining the electron, it is converted into cation or anion। समझ में आया? और मैंने आपसे पूछा किससे मिलता है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले पूछा था, प्रोटॉन कौन सा वाला? सो हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक नंबर 1 ना, on losing this one electron it becomes H positive and this H positive it is also known as proton। रिमेम्बर दिस। तो किससे मिलता है, ये मेरा क्वेश्चन सबसे पहले था। ये चला गया, इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, we have removed required number of electron and due to what happened, if you are removing electron there will be positive charge with the number। कितने निकाले? मैंने एक निकाला तो मैंने 1 डाल दिया। if I am removing 2, for example in case of calcium atomic number is 20, 2882, 20 हो गया। we can remove 2 electron, ओके। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर कितना डालेंगे वहां पे? +2, बराबर है। क्लोरीन का देखो, दिस इज अनदर एग्जांपल फॉर योर आयोनिक कंपाउंड CaCl2। Cl को करो ठीक से, CaCl2 2882, 18, oh sorry 20, here 17, 287, बराबर है। so 1 calcium here it will lose electron, 1 electron to 1 chlorine atom, other electron to other chlorine atom, so it will be Cl here and another Cl here, ionic bond is type। समझ में आया? एटम इटसेल्फ इट इज, कभी देखा किसी एटम के ऊपर ऐसे चार्ज लगा हुआ है? नहीं है ना। हम कार्बन का एटम लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग एनी चार्ज नहीं, वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल मींस विदाउट एनी चार्ज। जब वो लॉस कर रहा है, गेन कर रहा है, इफ इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, इफ इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अगेन द नंबर यू नीड टू मेंशन एज इट इज वन, वी आर नॉट राइटिंग नंबर। अगर बड़ा नंबर जैसे कि Ca उसमें हमको नंबर लिखना पड़ेगा, Ca2 पॉजिटिव। अंडरस्टूड ना? सो दिस पार्ट इज फॉर आयनिक। किया आपने पूरा charges which is known as cation, which one is anion? So cation contains which charge? Positive। आपको याद रह जाएगा ना? नहीं रहता है तो टेक रेफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड। हाँ, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इट इज एनोड, बट आयन इट कैरी नेगेटिव चार्ज। ये रेफरेंस मैंने आपको इसके लिए दिया है क्योंकि इनके जो वर्ड्स है वो थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। आपने ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट किया है ना?
चलो आगे 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 जाते हैं. Now in second bullet point it is given ion may consist of single charge atom or group of atoms that have a net charge on them. A group of atom carrying the charge is known as polyatomic ion or the radical. अभी यहाँ पे और एक चीज ये ना we have done this with a simple example. Simple example, if you have this one SO4 2 negative and CO3 2 negative. यहाँ पे देखो ना एक एग्जाम्पल पूरे हाँ ऐसे बोल क्या सल्फेट. हाँ This is sulfate, this is carbon. Okay. Here in this example we have taken single atom. We have converted that atoms into ionic form. Right? Here in bracket I have written this formula SO4 and 2 negative. ये सिंगल एटम है, ये सिंगल एटम है, this is single atom. No, this complete it is a group of atoms. So if you have example like this, it is known as polyatomic atom. Polyatomic. यहाँ पे NaCl का single atom के ऊपर आप positive negative कर रहे हो. Okay. Again another thing. It is negative, 2 negative, 2 negative. तो इसको balance करने के लिए how many positive we need? How many positive we need? This is 2 negative. Okay. एक एग्जांपल लेते हैं SO4 जैसे यहाँ पे एक पॉजिटिव था Na पॉजिटिव. In order to neutralize this, we have utilized Cl negative, one atom. In case of this Ca2 positive, so we need 2 negative, one यहाँ पर है, one यहाँ पर है, बराबर. Now here it is SO4 2 negative. So how many positive we need to neutralize this? 2. बराबर है. So if we go with hydrogen, okay, H positive, तो कितने लगेंगे? 2. बराबर. तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें ये चीज इसे वाले फॉर्म में विद हाइड्रोजन H2SO4. समझ में आया आपके रिलेशन? समझा? न्यूट्रलाइज कर रहे हैं हम कंप्लीट मॉलिक्यूल को. सो वी नीड इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल नंबर विद ऑपोजिट चार्जेस. ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है. थोड़े थोड़े एग्जांपल जितने हो सकते हैं याद रखो. एंड वन मोर थिंग, you keep on reading your NCERT textbook, because most of the time in school also teachers are asking from that textbook. थोड़ा बहुत एग्जांपल चेंज करेंगे. एंड CBSE का पूरा के पूरा as it is. And one more thing, next year most probably if I am here in Mumbai, आपके पेपर करेक्शन का ड्यूटी मुझे लग जाएगा इस साल भी. नहीं बट बहुत दूर से आते हैं पेपर, अपने यहाँ के नहीं. आप कहाँ से आता है? मैं भी उसी स्कूल से. अच्छा मीरा रोड जाएगी तुम? बहिंदर जाएगी? किधर? बहिंदर. वो किधर है? नहीं पता है, फिर छोड़ दे. बहुत दूर से पेपर आते हैं. ओके एनीवेज, मतलब एक्सचेंज होते हैं. अपने यहाँ के मुंबई में जाएंगे, मुंबई के पेपर्स यहाँ पे आएंगे, या किसी गांव के पेपर्स आ जाएंगे. इट इज हैपनिंग. मैंने इसलिए मुझे आपको बताना है क्योंकि जो बोर्ड के पेपर रहते हैं एज इट इज एक्टिविटी क्वेश्चन केस स्टडी पूरा के पूरा वही उठा के डाल देते हैं. तो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक रीड इट थरोली. इधर उधर किधर भटकना नहीं है, जस्ट फोकस ऑन दैट. चलो नेक्स्ट करते हैं. हाँ 10 नहीं, हाँ वो भी पॉइंट क्लियर करना पड़ेगा ना. मैं करती सुनो. अभी मैंने ये शायद पहले भी बताया था. 12th और 11th को भी पढ़ा. 11th को नहीं पढ़ा, only 10th नहीं. हाँ. And this year only I have started with class 10 in school. क्योंकि उनके तरफ टीचर नहीं थे तो मुझे चिपका दिया वहाँ पे. अब मैं वहाँ पे चिपक ही गई हूँ, मैं निकल ही नहीं रही. Okay, anyways, तो सबका कुछ अलग अलग रहता है. So that particular 2 groups, 2 radicals. अच्छा और एक चीज बताएं, रेडिकल पार्ट भी वहाँ पे. Now polyatomic it take much more time. बराबर थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है पॉलीएटॉमिक करने के लिए. तो अभी आगे आगे आप जैसे बढ़ते जाओगे ना, हर चीज को एक स्पेसिफिक आपको टर्म मिलता जाएगा. जैसे एटॉमिसिटी हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद में और एक टर्म हमने कहीं तो किया है, वहां पे शायद किया है. तो दिस इज आल्सो नोन एज रेडिकल. ना रिमेंबर रेडिकल, अगर आप
Actually, if you are taking admission in 11th science, there is salt detection. One part is there in which you will be given with one unknown salt. उस unknown salt के अंदर आपको positive और negative ion detect करना है. That time we are not saying ion, we are saying radical. Understood? तो radical ये थोड़ा higher level है, ion ये थोड़ा lower level है. Here to here now we are jumping. माँ फिर हम लोग आयरन बोल रहे हैं ये रैडिकल. It is your choice. मैंने बोला ना आयन थोड़ा यहाँ पे पड़ेगा, रेडिकल थोड़ा यहाँ पे पड़ेगा. अब आपको कहाँ पे रहना है? Here you decide. Go here. Okay ना, अभी बड़ी हो जाओ. Grow up now. A group of atom carrying charge. Last point दिया देखो. Group of atoms carrying charge is known as polyatomic ion or a radical. And this radical, it may be positively charged radical or negatively charged radical. If it is positively charged radical, then it is known as, jaldi dekho, it is on board, cation. Negatively charged, it is known as anion. And in paper, if you have this example, then without looking here and there, which example you will give? NaCl. बस कुछ देखना ही नहीं. Every year हर चीज में नमक डालते रहो. हर चीज में everywhere NaCl you will find. चलो next one लेते हैं. Now next one, some ionic compounds are given here. In that ionic compound again, see there, ये टेबल में भी नमक है. देखा? Last one, sodium chloride, sodium and chlorine. हाँ, और इसमें ये दिया है ratio by masses. Last time I think we have done masses वाला part. Do you remember? I have given you two equations, 2x for even, 2x plus 1 for odd. I told you it is only the rough estimation. For some element you will not get the same value. बराबर है ना? हमने circle लगा के exact values भी उनके लिखे थे. Okay, so this particular thing, it is by ratio by mass. Ratio by mass. You can have by atomic number वाला टीचर कैसे देते हैं? अगर टेक्स्ट बुक में रेशियो बाय मास है तो प्रिपेयर बाय रेशियो बाय मास. अंडरस्टूड? इसके अलावा भी और एग्जांपल मे बी देयर इन योर टेक्स्ट बुक. जस्ट रिफर योर टेक्स्ट बुक एंड प्रिपेयर एटॉमिक नंबर एज वेल एज मास नंबर एटलीस्ट फॉर फ्यू एलिमेंट. ज्यादा मत करो बिकॉज मेन फोकस, ऑलवेज मेन फोकस इट इज ऑन एटॉमिक नंबर. कार्बन तो है, कार्बन का है ही. 4 टॉपिक्स यू हैव इन क्लास 10. From that major और सबसे डेंजर टॉपिक इसका फॉर स्टूडेंट नॉट फॉर यू. तो बहुत अच्छा लगता है जो यही है. ओके, नेक्स्ट वन. नेक्स्ट लाइक द राइटिंग केमिकल फॉर्मूले. ये फॉर्मूले है ना, वी आर नॉट राइटिंग वन फॉर्मूला, वी आर राइटिंग मेनी. अच्छा, अभी मुझे ये बताओ इसमें कहाँ तक होते हैं? हुआ है या नहीं? क्या राइटिंग केमिकल फॉर्मूला वाला पार्ट हुआ था 6 में. टीचर से कांटेक्ट करना पड़ेगा. 6 What do you think it will be completed by 1? ये तो नहीं आई. मैं पढ़ रही हूँ, इसके एग्जाम है ना सैटरडे से. अच्छा, थोड़ा रिवर्स जाते हैं. इंस्टेड ऑफ राइटिंग केमिकल फॉर्मूले, फर्स्ट we will go for molecular mass and mole. इसमें molecular mass लेते हैं. mole concept next class में लाएंगे क्योंकि ये नहीं हो सकता. This both the things are important, writing formula and mole concept, क्योंकि जिनका टेस्ट हो गया है अदर सेक्टर्स में mole concept में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है और नेक्स्ट क्लास में सबको आना है, टाइम पे आना है. ओके, molecular mass. Now concept of molecular formula. Okay, I think this is clear for everyone. When I say methane, methane हुआ नहीं हुआ? Water का water it is a name. Okay, जो आपने बताया it is a molecular formula. Okay, in molecular formula you are giving the exact number. You are giving the exact number of atoms of different elements which are present. If I say sodium chloride, तो sodium chloride का formula क्या है? NaCl. But this is a ionic compound. याद रखना, उसके लिए कोई बुक में अलग टर्म्स भी यूज किया है. So for water it is H2O.
ओके उसके बाद में मैंने सोडियम क्लोराइड बोला था, सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला NaCl, कॉपर सल्फेट CuS बराबर है CuSO4 and it is only CuSO4. It contain water of crystallization. Water of crystallization. मेरे को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही नहीं पता, हम सिखाया नहीं है। अच्छी बात, अच्छी बात। उसमें कलर है ना? हाँ अच्छा, वो जो डायमंड वाला पर्ल्स वगैरह वो भी कुछ पहनते हैं, उसमें वो रूबी वगैरह के क्रिस्टल में कलर होता है ना? हाँ बस इतना याद रखो, जो कलर वाले कंपाउंड क्रिस्टल्स है दे कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इतना याद रखना, बस इतना ही याद रखो, और को ज्यादा मेहनत मत करो, आपको 10 स्टैंडर्ड में ही। Okay, so copper sulfate, it is CuSO4 5H2O. It contains 5 molecules of water of crystallization. Okay, all these three formulas we have written. Now, when we are writing the molecular formula, we are writing actual or exact number of atoms of different element in the compound. This is only for the molecular formula. But when it comes to the molecular mass, ये वाला concept, it is very important. How you will go for the molecular mass? For example, you are calculating molecular mass of H2O. करना क्या है इसको, कैसे इसका molecular mass find out करना है? So very simple molecular formula हमने लिख दिया यहाँ पे. It is equal to 2 because we have 2 atoms of hydrogen into atomic mass of hydrogen plus how many atoms of oxygen? One. So 1 into atomic mass of oxygen. So 2 into mass of hydrogen. Last time हमने calculate किया है with that formula also and directly with 1 plus what about this? 1 plus into 16. So it is 2 plus 16 which is equal to 80. Done. करना क्या है? Number of atoms into atomic mass. Plus if you have 2 atoms, 3 atoms, according to the formula you have to go for this. But always multiplication number of atoms, it is with atomic mass. So mass to learn करना ही पड़ेगा आपको at any cost, and it may happen this values may be given for difficult one, not for all. हाइड्रोजन आपको करना है, कार्बन आपको खुद करना है, ओके नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो ये वाले बेसिक वाले हैं ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, एंड फॉर दिस वन सल्फर क्लोरीन, या लर्न कर लो मासेस, नंबर तो आप ऐसे भी कर रहे हो. Okay, so we will have few problems based on this and then we will go for the next part. तो शायद नहीं होगा possible, but next class 2 things we have to complete: writing the formula and mole concept. Please come on time. हाँ, take down examples. हाँ, हमको वहाँ पे आपने 16 क्यों लिखा है? 1 atomic mass one atom of oxygen and mass number of oxygen is 16. So 1 into 16 is 60. अच्छा, समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? आपको क्या यूज करना है फॉर मॉलिक्यूलर मासेस? एटॉमिक मासेस. ओके, सो सी हियर अगेन, as we have 2 hydrogen atom, 2 into atomic mass of hydrogen plus, why plus? Because we have hydrogen and oxygen, plus 1 into atomic mass of किसका? ऑक्सीजन. बाद में मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन करके सम करो, फाइनल आंसर यू विल गेट. टेक द एग्जांपल. पहले वाटर का कर लो ठीक से, सॉल्व अच्छे से लिखो. हाँ, मेरा बहुत अच्छा है, मुझे पता है, आई एम वेरी गुड विद द ब्लैक बोर्ड. वाटर, फर्स्ट यू फाइंड आउट फॉर वाटर, एंड इन एक्सरसाइज क्वेश्चन अगेन दिस थिंग इज गिवन विथ फॉर्मूलास. ओके, फॉर्मूला दिया है कंपाउंड का, ये मैंने ऑलरेडी किया है, तो मैं भी आपको फॉर्मूला ही देती हूँ. इफ यू वांट यू कैन टेक डाउन द नेम. दिस इज अमोनिया, देन मीथेन, सॉरी फॉर्मूला लिखना है ना.
मीथेन CH4, देन और आपके बुक में और कौन सा एग्जाम्पल है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन कितना है एटॉमिक मास, हाँ देखो कितना है 12, हाइड्रोजन जस्ट नाउ वी हैव डन 1, ऑक्सीजन ये भी हमारा हो गया 16, नाइट्रोजन 14, सल्फर 32, क्लोरीन 35, ओके। इसके अलावा अगर मैम ने आपके टीचर ने अगर कुछ थोड़ा डिफिकल्ट दे दिया तो अकॉर्डिंग टू मी दे विल प्रोवाइड यू विद दिस डाटा। डिफिकल्ट वाला देंगे, इजी वाला नहीं देंगे, हाँ वो भी श्योर है ना। दिस देंगे तो बेसिक है, यू हैव टू लर्न एट एनी कॉस्ट। चलो करो फटाफट, क्या हो गया, किसी भी पेपर में आ गए आएगा तो भी क्या दिक्कत है, नहीं आएगा, नहीं पहले तो पेज आ रहे हैं। अच्छा हम लोग को भी वो डाटा फाइनल में तो आएगा ना, फाइनल में तो आ जाएगा ना। अरे फाइनल का फाइनल पर एक्स्ट्रा डाउट क्लियरिंग सेशन में हम लोग में नहीं बैठेंगे, तो पहले को इसका तो मुझे लेना नहीं है, ये कैलकुलेशन करना है। स्टार्ट विद दिस कैलकुलेशंस, देखती हूँ और एग्जांपल्स है तो कर लेना। चुप, ऑलरेडी यू आर लेट बाय 6 मिनट्स। मैंने टाइम चेक किया है। किसका नाम क्या है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इथेन एंड दिस इज हाइड्रोजन। सही कुछ मत किसी को बताना, लेट देम सॉल्व इट। पेन चाहिए, नहीं सॉल्व हो गया, खत्म हो गया। मेरे पास पूरी दुकान है पेन, मेरी दुकान में कुछ चीज आस्किंग फॉर सिंपल पेन। ये के बाद अंडरस्टूड? करना है, मुझे आंसर चाहिए आप दोनों से। they will not help you, no one will help you। आपको तो अपने बुक में खुद ही सॉल्व करना है। डन? हाँ और मैंने दिए और एक डिजिटल थोड़ा देखिए। CH3OH CH3OH अल्कोहल है, मिथेनॉल। नेक्स्ट ईयर पढ़ना है सब। स्टार्ट रीडिंग ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आपके बुक में नाम है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अच्छा, क्यों रुक रहे हैं? चलने दो फटाफट, 1 बाय 1 एक एक को आके आंसर लिखने। कितने हैं? 4 and 4 8 and 1 मैम मैं वो पहला मैंने एग्जांपल्स आ गए, वाटर तो हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 एक और देना पड़ेगा। मैम यूनिट क्या होता है इसका? एटॉमिक मास यूनिट, यूनिट फील्ड ग्राम्स में कैलकुलेट करते हैं। 16 ऐसा अच्छा लगता है आपको? यूनिट फुल ग्राम्स, इट इज नॉट इन ग्राम्स, इट इज ग्राम वाला कंसेप्ट हमको बोल में करना है। इन मोल दी एवोगाड्रो नंबर, ग्राम वाला यूनिट टू ग्राम वो करना है, इसलिए तो सब चाहिए ना उसके अंदर। एक और लेना है ना मुझे C2H4। ओके, इसका हो गया ना, ये वाला पार्ट कंप्लीट है। ये नहीं मैम लोगों को कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 और एक नंबर दो।
आरटी है मैम। हाँ बच्चे 9 है ना। नहीं बच्चे ना आरटी है मैम हमने लिख लिया था This 4 and this 4 8 and 1 9 ना। नहीं मैम अभी करेंगे वो है ना। मैम मुझे निकाल दो आप, मुझे नहीं आता। क्यों? अरे अच्छा तो है फिर उससे स्टार्ट करना। मेरे को समझा करूँ? मैंने कहा था बस आई How many you have completed? मैम वो CH तक हो गया जल्दी जल्दी करो। All done. All done. बंद कर दे रहा टॉपर गुड ना। यूनिट फिट चुप ग्राम नहीं है इस बिकॉज़ यूनिट फिट वो क्या है उसका यू बड़ा के छोटा। अरे भाई small u this we have done I think unit field atomic mass unit और मैंने ये भी बोला था कि atomic mass still clear है इनको कौन सा ये है u U है AMU है a atomic mass unit AMU लिखना what अच्छा नहीं 32 plus 20 कितना हो गया okay all right हाँ all right हाँ चलो एक आंसर लिखते हैं वो मत वहां से देखने की जरूरत नहीं है वो एंड राइट देन आंसर मैम शुड आई राइट सबको सबको मिलेगा ना 9 मैंने एग्जांपल्स ऑलरेडी है मैम मैं ए यहाँ only one of your choice सारे लिख के नहीं आना जो याद है मैम मैं नहीं Back. अरे मैं बताऊं मैं सिखाऊं somebody just complete that अभी ये O2 है तो O का आप इसके बाद मैनेज क्या है O का 60 दे मैं उसे यहाँ पे D है नहीं तो 62 ना still you are writing questions मैम हो गया ऊपर वाला हो गया all done ऊपर वाले मैम करूँ मैं अभी हो गया मैम मैंने सिखाने के बाद please check this answer it is correct for ऐसे ही करते हैं ना कि मैं गलत कर दी नहीं मैम नो मैम रॉन्ग wrong है wrong है मैम मैम 2 into 12 मैम 2 into 12 मैम मैं एक मिनट 2 into 12 plus 6 into 1 अरे 2 2 ये होगा 12 मैम मैं करूँ मैम प्लीज मैम ब्रेक ले लो नहीं मुझे घर ले दीजिए मैम ऐसे करो करेक्शन है who will do this मैं करूँ अरे यार करेक्शन है ना इसमें अरे नीचे बैठता काम करेगा देखो आपने उधर भी कुछ तो गलती किया रहेगा मैंने आई सब डोंट वैसे ही थिंक किया। सब रॉन्ग सबको क्रॉस कर क्या है ये सैटरडे से अलग पेपर चेक करो करेक्ट है मैम मैं करूँ अरे लेट मी एक्सप्लेन दिस मैम यहाँ से 2 into 12 plus 6 into 1 2 12s are 24 plus 6 it is equal to 30 understood ना लिख दो बाबा आखिर लिख दो सेक्शन मैम मैं understood ना मैम इसके बाद मैं जल्दी क्विकली कमेंट राइट 17 वहां पे लिखे खाली आंसर लिखो जस्ट राइट डाउन आंसर ओके 17 नेक्स्ट ओजोन यूज राइटिंग फॉर ओजोन ये सब का जरूरत है इधर टू क्या राइटिंग ओके मैम नहीं आई वांट डायरेक्ट आंसर बेटा आई वांट डायरेक्ट आंसर Someone shiny direct answer. डायरेक्ट आंसर आई सेड shiny is taking more time मैंने बोल She does not mind. चलो नेक्स्ट ओनली आंसर सा Only answer ना अरे व्हाट इज दिस पूरे बड़ा learn किया। बहुत ठंडी लग रही है यहाँ सॉरी बराबर है वो 1 into कोई आंसर दिया अरे बोलना भी मैं शुक्र नहीं आएगा नहीं जाता है ज्यादा टाइम लग गया शक्ल देख के मैंने बस मैंने तो उसकी शक्ल देख के बचपन में ही लगा था टिफिन में okay next one still you are remaining 1 2 and 2 more मुझे बहुत वो दोनों कहां पर है आप नहीं आ रहे क्या जल्दी 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 काम फास्ट
हो गया ना आपका? चलो ये वो क्यों नहीं आ रहा है? इसका नाम क्या है? हो गया ये क्यों सबसे आगे है? ये नहीं है। मैंने विनोद का क्या पढ़ेगी कर सके? And for that one, चलो वो ग्राम में डाल देंगे सबसे मैं बात करिए नेक्स्ट क्लास में कितना पैसा क्या करना है और जो एक्शन है ना क्लास में सब्स्टिट्यूशन वाले लोगों को बताया मैंने मेरे को बताया ये राजस्थी सर ये कौन सा टेस्ट है? अरे वो मैथ्स का ये बात लाइक तो मार के चला तो स्टैटिस्टिक्स ऐसे चला गई थी तो और है इसको क्या है सोशल 15